नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर और आज की शुरुआत करने से पहले यही कहेंगे दोस्तों कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे नजर डालते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है, विंडो फॉर एफटीए श्रिंक एज इंडिया ब्रेसेस फॉर सेट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 5 एंड ये रिलेटेड पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से एंड पेपर 3 इकोनॉमी से भी इसको लिंक किया जा सकता है। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग एफटीए नेगोशिएशंस विद द यूके, European Union as well as India-Australia Comprehensive Economic Cooperation Agreement, their relevance for India, issues associated with them and what lies ahead। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इट इज अ पैक्ट बिटवीन 2 or more nations to reduce barriers to imports and exports among them। Our next important headline is backed by Oli, other parties, Prachanda appointed Nepal PM। It is available on page number 5 and ये related paper 2 international relations से। In this article we have to know about relationship between India and Nepal and recent developments linked to it। तो दोस्तों, इंडिया नेपाल रिलेशंस को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अगर हम ओवरव्यू देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल recently appointed Pushpa Kamal Dahal as Prime Minister of Nepal and she is the leader of the parliamentary party of Communist Party of Nepal। ठीक। Our next important headline is citing damage to ancient rock carvings, expert red flag mega oil refinery project। It is available on page number 5 and ये related है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। In this article we have to know about Ratnagiri oil refinery and petrochemical complex, its impact on ancient rock carvings। तो दोस्तों, the Ratnagiri oil refinery and petrochemical complex project is being developed by Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Limited and now it is at the center of a row over whether it might damage ancient rock carvings found in the area। And do you know friends, rock art and petroglyphs estimated to be 20,000 years old and they are classified as protected monuments by the State Archaeology Department and Archaeological Survey of India and they have been added to the tentative list of UNESCO's World Heritage Sites, right? Our next important headline is on the anvil, floating solar farms on water bodies, first one at Bhavana Lake। It is available on page number 7 and ये related to paper 3 energy section से। In this article we have to know what are the benefits and challenges of installing floating solar farms in lakes, water bodies and ponds। दोस्तों, recently Delhi government has come up with a new proposal to generate electricity through solar energy by installing floating solar farms in lakes, water bodies and ponds across the city and project on pilot basis will be started at Outers Delhi Bhavana Lake। And do you know friends, floating solar panels are cheaper and more efficient than rooftop ones and they don't need land to be acquired to install photovoltaic panels and they also reduce water evaporation, thereby saving more water for hydropower generation, right? Our next important headline is a partner's duty। It is available on page number 10 and ये related है paper 2 international relationship। What are the key highlights of the third round of negotiations of the India-European Free Trade Agreement, its significance, challenges associated with it and way ahead। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड हैं। इसके अलावा एक लिंक भी प्रोवाइड किया गया है तो आप वहां से भी कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो थर्ड राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस of the India-European Union Free Trade Agreement concluded recently and two sides are also negotiating an investment protection agreement which will contain investment protection standards and an independent mechanism to settle disputes between investors and states under international law। Our next and last important headline is an engine for growth। It is available on page number 11 and here related to paper 3 science and technology से। In this article we have to know about the culture of innovation backed by solid base of research and development in India। How much does India actually spend on research and development, its comparison with other countries and what more steps need to be taken in this context। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर हम ओवरव्यू देखें तो इन दिस आर्टिकल इट हैज बीन हाइलाइटेड दैट इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, राइट? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।